Right. So yesterday we started with LinkedIn ads. Right. So today we are going to work on X, which is formerly Twitter. Right. How many of you have account on X? I have, sir. Okay. Now let me just enable the chat. Yes. Okay, Shruti says I don't have. It's okay, Shruti, आप बना सकते हो account. So this is yes. Okay. So this is your X, right? And earlier when it was Twitter, it was way too better because everything, almost everything was free, right? So जब से X हुआ है, काफी सारी चीजें इसमें प्रीमियम में चली गई हैं that you have to take the premium version to use Twitter or X. Right? Now this is majorly used for social media listening. Right. अब social media listening क्या होता है that what people are talking about your brand, right? Let's say I let's say I have any issues with the Airtel, right? Or let's say I have any issues with Indigo, Air India, any of the airlines, right? So what I'll do is instead of reaching out to their support team or customer care number, I'll go to Twitter and I'll tweet something about them. Let's see, people might have done it already, right? Let's say if I just tag over, let's search for Indigo. See this. Dear Indigo, thank you for having zero regards for defense personnel and charge me for just carrying my uniform and shoes. I salute your cheapness. And you just see quickly, this tweet was done at 11:11 a.m. and 2 मिनट पहले इंडिगो के ऑफिशियल चैनल से रिप्लाई जा चुका है. Right. Hi, this is unusual and we are connected to hear about this. We request you to please share our PNR by DM so that we can proceed further. Right. Even all the messages, all the tweets that has been done, they will get in touch with they'll get in touch with you very quickly. Why? अगर हम लोग इनके कस्टमर के नंबर्स भी हैं तो हम लोग वहां से भी तो रीच आउट कर सकते हैं. Why they are so active that the moment you'll tweet, you'll get reply within minutes. Same with Zomato. Even if I search Zomato over here, see this. Right. Zomato के DP Goel. So you choose to completely ignore the scam. Restaurant said nobody came to pick up. We canceled the order. Rider said I never went to pick up. My bike broke. The app shows order has been delivered and no way to contact support. Running away with money. And instantly, 5 minutes ago, they replied on this tweet.
Right. So all these brands are very popular, so they can't ignore any of the tweets which comes on this. Right. Just a minute, guys. Right. So this is what we called as social media listening. Right. Now, let's say if I was Swiggy, मैं इस ट्वीट पे रिप्लाई कर सकता था दैट स्विच टू स्विची एंड स्विच टू स्विगी एंड यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस देन जोमेटो। अगर यहाँ पे जोमेटो बात नहीं करता, या मैं अभी भी कर सकता हूँ एज अ स्विगी, बट यूजुअली ब्रांड्स नहीं करते हैं, बट दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सोशल मीडिया लिसनिंग, दैट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट आवर ब्रांड। एंड यहाँ पे वी रिप्लाई टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट दे हैव, सो दैट कोई और आके पढ़ेगा तो दे शुड सी दैट हाउ आर ब्रांड इज कंसर्न्ड अबाउट देयर टारगेटेड कस्टमर्स। राइट। सो ट्विटर इज मेजरली यूज्ड फॉर सोशल मीडिया लिसनिंग। Every brand, every popular brand, they are not, you are not able to reach to the customer support team. Just go to Twitter and tweet and they'll get back to you within like couple of hours. Because brand because it's all about brand reputation. This is also part of ORM. ORM stands for online reputation management. So Twitter is widely used for social media listening and ORM. Now coming back to the platform. So when it was Twitter, the idea was just to have small tweets, right? Like what you're doing, you're traveling, you post a picture with a small caption. So it was all about writing different tweets. But now the platform has completely changed. Now it's more marketing oriented, right? So what you can do is you can create your profile, right? Right, so you'll have way to put up your cover picture, your DP, your username and your bio, right? So आप यहाँ पे अपना account create कर सकते हो, right? Over here you will see all the posts that you have created, right? Replies that you have already given to any of the post, right? See that even I have like back in 2023, I have also got this with some Paytm, right? And again, we have highlights, but this comes in premium model that if some, it's more like a featured section. Articles, right? You can now write a lot of content on X, right? But again, everything comes under premium version. Media will have all the pictures that you have uploaded, likes, whatever you have liked from Twitter. Right? Over here, you'll be able to see that how many people you are following and how many people follows you. So if I click on post, I can post my pictures, I can post GIF, right? So the AI of X is called Grok, right? जो यहाँ पे आपको AI मिलेगा, that is called Grok. तो आप यहाँ से भी सारी चीजें प्लान आउट कर सकते हो, right? You can talk to Grok, you can create images, you can edit images, you can ask about the latest news and all, right? Now, how X can be helpful in your business strategy? तो अगर आपका if your business is based in India, right, then X is not a good particular platform for you, right? Until unless you want to go on a very high level. I have a marketing agency. I'll throughout the day I'll be more active on Instagram as compared to X because my target audience is
नॉट एक्टिव ऑन एक्स, राइट। तो एक्स किस चीज के लिए पॉपुलर है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, सोशल मीडिया लिसनिंग, ORM, एंड इट्स मोर लाइक पीपल हु आर इनटू डिबेट्स, पॉलिटिक्स एंड अपडेट्स। तो ये सारी चीजों के लिए ट्विटर काफी पॉपुलर है, दैट यू विल ऑलवेज सी समथिंग ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, राइट। तो आप ये सारी चीजें पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर, नाउ द अर्लियर व्हाट देयर वाज इज, सो आपकी जो पोस्ट की कैरेक्टर लिमिट है दैट इज जस्ट 280 कैरेक्टर्स ओवर हियर, व्हिच वाज वेरी शॉर्ट। अर्लियर इट वाज लाइक 140 कैरेक्टर्स, लेटर ऑन दे इंक्रीज्ड। दैट इज व्हाई द मेन गोल वाज टू हैव स्मॉल ट्वीट्स। सो यहाँ पे नाउ यू कैन राइट समथिंग विद 280 कैरेक्टर्स इफ यू हैव अ प्री अकाउंट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक्स प्रीमियम भी आ चुका है। If I click on premium, you can see that small reply boost, bookmark folders, highlights tab, edit post, and longer post. Right. So it will cost you 141 rupees every month. In case if you go with this, half ads in for you and following, larger reply boost, get paid to post, check mark, grok with increase limit, X Pro, Analytics, Media Studio. तो ये सारी चीजें अब प्रीमियम में है, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब टू वट एवर यू वॉन्ट। तो अगर आपका, बट यस, अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस इंटरनेशनल है, लोकल नहीं है, इंडिया में नहीं है, देन यू कैन ट्राई यूजिंग एक्स, बिकॉज पीपल वर वेरी एक्टिव ऑन एक्स, राइट। अगर इफ आई एम टारगेटिंग US, इफ आई एम टारगेटिंग कनाडा, इफ आई एम टारगेटिंग UK, तब मैं एक्स कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज वहां पे लोग शायद अभी भी एक्टिव हैं, पहले तो थे, राइट। whenever we had any sort of project which requires international targeting, तो हम लोग एक्स को भी कंसिडर करते थे, राइट। So it's again using like the same social media account where you will be able to post anything over here. Along with the locations, you can post your schedule, you can post emojis, polls. तो आप यहाँ पे सारी चीजें डाल सकते हैं, right? You'll click on explore and you will be able to see today's news, that what is trending today. Humanity, US, right? Supreme Court. So these are all now. X की एक अच्छी चीज, that you get to know what is trending, right? So in case if you are using, if you know what is trending, you can use that trend on Instagram also. So it helps you with the content planning. For example, यहाँ पे मेरे, I can see like what people are talking about. Now, okay, यहाँ पे अभी let me see इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है। I'll show you how to change the locations. ये देखो, स्टॉक मार्केट, चाणक्य, धर्मेंद्र, रेड फोर्ट। सी धर्मेंद्र एंड रेड फोर्ट इज टोटली न्यूज एज ऑफ नाउ, राइट। सो इफ आई क्लिक ऑन रेड फोर्ट, आई विल बी एबल टू सी दैट व्हाट पीपल आर पोस्टिंग अबाउट रेड फोर्ट, right? So that incident occurred and now people are talking about, you can see that 187K post, dharmendra 36.3K post, right? सो यू कैन सी वट इज ट्रेंडिंग। सो अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पार्टिसिपेट करोगे, योर अकाउंट विल गेट मोर impressions. This that's how we grow the X accounts, right? But yes, I can take inspiration from this and I can create content on Instagram as well. That if I want to create something about Dharmendra, I can plan, if I'm seeing that people are talking about Chanakya, then also I can plan out content accordingly, राइट। यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाओगे तो आपको सारे ट्रेंड्स दिख जाएंगे, नॉट जस्ट वन। सी रेड फोर्ट, धर्मेंद्र, वेडनेसडे विजडम, एग्जिट पोल, भूटान, इनर पीस, राइट, ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान के लाभ, तो सी सारे ट्रेंड। If you'll get into news, you'll be able to read about news, right? What are the
what are all the ongoing news. Sports, you'll get to see everything in sports which is trending. Entertainment, again, you will see all the trending topics over here. सो दैट इज हाउ यू कैन यूज एक्स. सो यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन है. आप अगर इस पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर लोकेशंस पे क्लिक करोगे, you can change your locations accordingly. Let's say if I want to know about India, I've already selected India. Right. Let's say I want to know about Chandigarh. Chandigarh, India. एंड मेरा कंटेंट अपने आप वहाँ के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. राइट. सो अगर आपको यूएस में ट्रेंड देखना है, आपको कनाडा में ट्रेंड देखना है, you can just get into this and change your location. जी, चेंज हो गए यहाँ पे सारे ट्रेंड्स. Right, so this is the main usage that I feel that can be used. Right, बाकी आप ट्वीट्स करके देख लो कुछ. यू कैन ट्वीट, यू कैन रीट्वीट. अगर आपको किसी की ट्वीट अच्छी लगती है, आई कैन रिप्लाई, आई कैन रीट्वीट एज वेल. सो यहाँ पे रिप्लाई है फर्स्ट, देन रीट्वीट. इट्स मोर लाइक रीपोस्ट ऑन इंस्टाग्राम नाउ. राइट. Likes, and you will be also able to see that how many views this post got. 192K. I can save and I can share. तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप किसी भी पोस्ट के साथ कर सकते हो. Then you'll have a message tab where people will be able to message you, right? And then we have Grok AI. Then there are lists as well, which are like Facebook groups. तो लोग पहले बीच में when list came, you will see a lot of groups has been created on X as well, right? तो आप यहाँ पे it's more like communities. Facebook groups थे जैसे, वैसे यहाँ पे भी आपके groups हैं that you will be able to talk to people in that group. People will be discussing few things and you will always be able to see what they are doing. So it's exactly like Facebook group. Bookmarks, that आपने जो भी पोस्ट को सेव करके रखा है, दे विल बी वर्क, दे विल एक्ट एज योर बुकमार्क्स. Then there are communities like what people are talking about a particular topic. So if you go to technology, you will get to see all people talking about different technologies. So these are your communities. Premium, that you can upgrade your normal account into this. You can just see like what is different between the free and the paid account. And then there is a button of more, and there are ads. So I'll click on ads. It will take me to ads.x.com. Now you see this, all these campaigns. Awareness, consideration and conversion. कल भी यही देखा था, मेटा में भी यही देखा था, that these are three cycles on which you plan to advertise. One of the reasons not we don't advertise on Twitter is that it charges us in USD. There is no option that we can pay in INR, right? Plus, it is very expensive, right? So when I launched like couple of follower-based campaigns on Twitter, when there was an election in US between Donald Trump and Hillary Clinton, so I was working with some politicians. So we were running campaigns and we were getting like good 2, 3, 4 followers for like $10. राइट. तो अगर मैं अपने अकाउंट के लिए उसको सोचूं दैट आई कांट स्पेंड 1000 रुपीज जस्ट टू गेट लाइक 4, 5 फॉलोअर्स ऑन माई अकाउंट. राइट. सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इंडियन टर्म्स. क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस बिल्ड करना है, कंसिडरेशन बिल्ड करना है या कन्वर्जन बिल्ड करना है, तो दैट कैन बी डन ऑन मेटा एज वेल. बिकॉज ये ट्विटर भी जो है दैट इज ऑल्सो इन इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग. राइट. तो यहाँ पे भी मैं टारगेट तो वैसे ही करूंगा. तो आई रादर टारगेट दैट प्लेटफॉर्म विच इज कॉस्ट इफेक्टिव. ऑल्सो माई यूजर इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. तो यहाँ पे आपको सारे कैंपेन आपके मिल जाएंगे. एक कैंपेन दिखाता हूँ, बाकी आप कैंपेन खुद एक्सप्लोर करोगे. नेक्स्ट, यस, चेंज ऑब्जेक्टिव.
I think it will ask you to create your ad account. It will ask you to add your card or something. तो उसको skip करने का try करना. Just look out for like how you can skip that part. It's a campaign name. Test website traffic. I'll click on next. So we are, see, again the same thing. We had campaign, we have ad group, and we have ad, right? Now you see this budget and schedule, how much you want to spend. So यहाँ पे आपके पास सिर्फ USD की ही option है. So I'll go with $10 total spend, start date, end. Now, since I have already opted for website traffic campaign, it is asking me for delivery, right? Goal, site visits or link clicks. I want people to visit my website. Site visit event, what event you want to target. Landing page view, site visit. तो यहाँ पे X का भी अपना पिक्सल है which works to track your progress. राइट कि आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे पहुंची, आपके गोल कंप्लीट हुए नहीं हुए, तो इसके लिए भी आप पिक्सल वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो. बिडिंग स्ट्रेटजी एडवांटेज प्लस इज ऑटो बिड. Automatically maximize your results at the lowest price. So maximum bid, what we do is like maximum delivery. Maximum bid, set the maximum you are willing to bid for each site visit. तो cost per goal कि मुझे एक विजिट का कितना पे करना है. Pay by impressions, recommended, link clicks, right? So this also works on CPM model like Meta, but आप क्लिक्स भी चूज कर सकते हो, देन आपको हर एक क्लिक पे करना पड़ेगा. पेसिंग स्टैंडर्ड, रिकमेंडेड, एक्सेलरेटेड. अब स्टैंडर्ड में क्या है, जितना भी आपका डेली बजट है वो ट्विटर धीरे धीरे स्पेंड करेगा. एक्सेलरेटेड में जब जैसे ही दे बिलीव दैट दे आर एबल टू डिलीवर यू द एड, दे विल क्विकली एग्जॉस्ट योर बजट, राइट? सो वी ऑलवेज गो विद द स्टैंडर्ड. So in case if you have any app, you can also connect your app over here. Now the placements that X has, home timelines, जो आपको home पे सारा content आ रहा है उसमें ऐड आएंगी. प्रोफाइल्स में अगर कोई सर्च कर रहा है, प्रोफाइल्स में आपकी ऐड आएगी. अगर कोई सर्च कर रहा है, सर्चेज में आपकी ऐड आएगी. रिप्लाईज में आपकी ऐड आएगी. एंड मीडिया, अगर कोई अपना चेक कर रहा है, किसी प्रोफाइल पे जाके किसी का चेक कर रहा है, वहां पे भी आपकी ऐड आएगी. सो एक्स हैज ऑल दीज प्लेसमेंट्स. Now you know what demographics are, gender, any women, men, age, languages. You want to, if you want to target any specific language, and locations also. Now, good thing about XAD is that they have like very different targeting features like devices. Now, let's say I want to target people with like good amount of money, right? So मैं यहाँ पे iOS टारगेट करके, लेट्स से जिनके फोन में किस कौन सा वर्जन है iOS का, आई कैन टारगेट दैट, राइट? डिवाइस मॉडल, आई कैन टारगेट लेट्स से पीपल हैविंग लेट्स से 16 Pro Max, right? So you can target people on the basis of iOS that they have been using, the mobiles that they have using, so that you can understand that what kind of audience they are. Even they have option of targeting carriers also. Let's say if I want to target people who are using Airtel, तो ये सारी ऑप्शंस हैं. देखो, एयरसेल, एयरटेल, सेलवन, डॉल्फिन, आइडिया, जियो, रिलायंस, टाटा डोकोमो. सो मैं यहाँ पे आई कैन टारगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर्स एज वेल, राइट? टारगेट people who first used X on a new device or carrier. तो ये सारी टारगेटिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं. Then we have is like audiences. Again, same set of audience which we called is saved or custom audience, right? So this is one targeting that you can do like on the basis of devices that they are using. Second is your this targeting feature. Keywords, like if my ad should be shown to people who are searching for like best digital marketing agency.
अगर किसी ने ट्विटर पे ये सर्च किया है, दे शुड सी माई एड। Now, one of the good options that I like about X is follower lookalikes. मेटा में lookalike audience बनाई थी हमने। यस सर। क्या होती है lookalike audience? सर जो लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। So it is based on the pixel data that we get. हम्म। So we can create from our custom audience, we can create a lookalike audience. ओके। होता क्या lookalike audience में? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या पिक्सल टू पिक्सल, क्या होता क्या है lookalike audience? वो तो बस बन जाएगी कस्टम ऑडियंस से, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ lookalike ऑडियंस? Person, the people who are searching for the same products or who are supposed वो to. तो वैसे भी टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं ना हम लोग एड्स के थ्रू। बट लुकलाइक का कॉन्सेप्ट क्या था? व्हाई टू यू गेट इनटू लुकलाइक ऑडियंस? पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, दे विल एनीवेज बी टारगेटेड विद योर एड। Suppose somebody is purchasing a particular shoe, हम्म। and we are having shoes but different kind of, that is something like that. तो वो ऑडियंस में क्यों है? वो तो फिर प्रोडक्ट की चीज हो गई ना, दैट वी हैव अ सिमिलर प्रोडक्ट। दैट हैज नथिंग टू Hmm. डू विद द फॉलोअर लुकलाइक्स। सर, यस आदित्य। अभी जैसा मेरे ऑडियंस है एग्जिस्टिंग, और फिर उनको मेरा जो प्रोडक्ट पसंद है, और वही ऑडियंस जैसे उनके जैसे ही जिनको मेरा प्रोडक्ट पसंद है, हम उनको टारगेट करते हैं लुक अलाइक में। ओके। Sir, it's like similar to already our existing audience, like meaning they are look-alike, like maybe they are interested in behavior or demographic. अगर वो सिमिलर ऑडियंस इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट बेस, नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसमें से तो। कस्टमर डेटा बिल्डअप करने के लिए सिमिलर कस्टमर डेटा, कस्टमर डेटा बिल्ड क्यों करोगे आप? so to get a better reach, like increase my reach. वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा रीच है। आपके बजट पे डिपेंड करता है वो। आप बजट बढ़ा दो, रीच बढ़ जाएगी। सर सर मेटा आई थिंक इसमें ना जो भी ऑडियंस होता है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, हम्म। और उसके अकॉर्डिंग आई थिंक जो हम लिस्ट अपलोड करते हैं तो मतलब वो मिली जोली जो ऑडियंस होता है, और आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ है। सर इसका ये तो मतलब नहीं, जैसे मार्जिन को एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए सपोज आई हैव चूजन 16 to 35 एज ग्रुप, तो 16 से थोड़ा पहले और 35 से थोड़ा बाद वाला मार्जिन से एक्सटेंड कर दे। उसका लेना देना कुछ नहीं है लोकल एक्स से। ओके। ओके। तो हम्म। फिर कंफ्यूजन हो गया सर। पढ़ो बैठ के दोबारा। ओके। सो यहाँ पे लुक अलाइक का मतलब क्या है? एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियंसेस ऑफ मेटा, आदित्य वाज द वेरी ओनली वन हु वाज वेरी नियर आदित्य एंड नेहा, राइट? अनुषा ऑल्सो। बाकी आप लोग सब बस हवा में तीर चला रहे हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट every one of you missed that one particular point, that why we created a lookalike audience, right? So please remember that, go through that again. Now ओके। over here is follower lookalikes. Let's say if I am a content creator and technical guruji is my competitor, let's say Gaurav Chaudhary. He's got like 3.7 million on X and he's my competitor. I want to have followers like Gaurav Chaudhary followers, because people are following him, they are buying the products from him, and they are giving that engagement on his account that he is able to grow. So यहाँ पे फॉलोअर लुकलाइक्स क्या होंगे? जो भी टेक्निकल गुरुजी के फॉलोअर्स हैं उसकी सिमिलर ऑडियंस मुझे वैसी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेहा, इफ नेहा इज फॉलोइंग गौरव चौधरी, तो नेहा के मिलते जुलती ऑडियंस, लेट्स से नेहा से जो मिल रही है, द लुक अलाइक ऑफ नेहा है सुचेता, तो सुचेता को मेरी एड दिखेगी दैट फॉलो टेक्निकल राहुल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स।
राइट। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वैसी मिलती जुलती ऑडियंस मुझे एक्स ढूंढ के देगा, right? For example, let's say if I am working for any politician, right, I can target any of the politician over here so that I can get the similar audience like them. So this was a very good option in X, that you can target follower lookalikes, कि उनके follower के भी lookalike आपको X ढूंढ के देगा। Then you can target people on the basis of interest, and you can target people on the basis of movies and TV shows, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स को टारगेट करूँ, आई कैन डू दैट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको टीवी शो फ्रेंड्स यूएस कनाडा, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन टारगेट सारी चीज़ें यहाँ पे। You can target movies as well, and then last is your conversation topics, that if people are having conversation on any particular topic, you can also target that, right? Retarget people who saw or engaged with your past post. You can also target them. Also target followers of Digimentor. तो जो भी आपके फॉलोअर हैं उन्हें भी आपकी एड्स दिखेंगी अगर आप इसको इनेबल करते हो। After that, click on next. Now you just have to create your ad. So मेरी यहाँ पे tweet आ गई. It will be in the form of tweet. Single image carousel, so you can select the format. So this is your image. Headline. Your website URL, since we have selected the website traffic campaign. So done, campaign is created, right? So I'll click on next. It will ask you to add money in your account and you will be able to launch your ad, right? So in case if I change my objective over here, right, let's say if I go with sales campaign, next. So now over here, everything is same, right? The placement, demographic, device, audiences, targeting feature, everything is same over here. Optimize targeting is your advantage plus targeting over here. Allow X advanced AI technology. So that's your advantage plus audience. ऑटो बिड ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स एट लोएस्ट प्राइस। टारगेट कॉस्ट हमें पता है, मैक्सिमम बिड हमें पता है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन भी हमें पता है, दैट हाउ मच वी वांट टू गिव, लाइक एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन, दैट हाउ वी आर लायबल टू पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें सारे कैंपेन्स में बिल्कुल सेम है। आपको ऐड ग्रुप, टाइटल, टारगेटिंग फीचर्स सारा कुछ सेम मिलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका एड फॉर्मेट भी वही है, सिंगल इमेज और carousel. You can just create these formats and that's it. You just add your media, you just add your caption, and you will be able to create your campaign. Right, so just go with any of the campaigns. All the settings will remain same.
क्लियर है सबको? बहुत इजी है एक्स के कैंपेन्स, इज जस्ट दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव सो पीपल डोंट यूज इट, राइट? बट यस, अगर आप you are working on your brand part, that you want to grow your brand, and then you might start working on this, like, so that uh, you can manage your ORM and social media listening part. सर अगर किसी को फॉरेन कस्टमर्स ही टारगेट ज्यादा करने हो इन समथिंग, तो मिनिमम बजट क्या रहता है इनका स्टार्टिंग में फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस? Budget remains like, again, you मतलब have to किस पे plan in. इफेक्ट होना, किस पे इफेक्टिव रिजल्ट आना स्टार्ट होगा? मिनिमम स्पेंड कितना करना पड़ता है? अगेन डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आप जब कैंपेन बनाओगे साइड में आपको एस्टिमेटेड रीच आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बजट प्लान कर सकते हो। यू कैन गो विद लाइक $20-25 a day। ओके। And so one more question. If we are targeting foreign audience, तो अगर हम लोग ट्विटर पे काम कर रहे हैं, so is it mandatory to maintain your Facebook and Insta as well? मतलब बहुत अच्छे से उस पे भी काम, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम उसे इग्नोर कर दें और एक्स पे काम करते रहें? विल इट वर्क? या मतलब अगर कोई यूएस में बैठा है तो क्या वो फेसबुक और इंस्टा को भी चेक करेगा अगर हमारा एक्स पे काम हो रहा है तो? Every audience is see, it's like you have to be present across all the platforms। तो अगर आप इंस्टा पे भी कंटेंट डाल रहे हो तो आप एक्स पे भी डाल सकते हो, राइट? बट नहीं, अगर ऐसा मुझे नहीं एक्स पे डालना, अगर है। मुझे एक्स को टारगेट करना हाँ, कर सकते हो आप। यू जस्ट है। हैव टू एनालाइज वेयर योर टारगेटेड ऑडियंस इज एक्टिव। अब मेरी मेरी ऑडियंस नहीं है ट्विटर पे, तो मैं नहीं डालता। नहीं नहीं, माय मैंने बोला ऑडियंस अगर इज। मेरी ऑडियंस एक्टिव है ट्विटर पे, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बोला कि इन फॉरेन कंट्रीज, इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, ऑडियंस आर मोर एक्टिव ऑन ट्विटर, राइट? सो सपोज आई एम टारगेटिंग ट्विटर एंड आई एम इग्नोरिंग फेसबुक एंड मेटा, मुझे इंडियन ऑडियंस टारगेट नहीं करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस में बैठा बंदा दे विल चेक फेसबुक एंड इंस्टा एज वेल एंड क्रेडिबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज वी आर नॉट मच एक्टिव ऑन फेसबुक एंड इंस्टा? ऑब्वियसली वो तो होगा ही, बिकॉज यू हैव टू बी। मैंने सी, हम भी तो हर हर प्लेटफॉर्म चेक करते हैं किसी भी कंपनी का, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द चैनल्स। इट्स नॉट लाइक इफ यूल जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ट्विटर you'll ग्रो, राइट? तो ओके। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। ओके। एंड सर इसके बारे में गूगल ठीक इन्फॉर्मेशन दे देता है? सपोज आई वांट टू नो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजंस ऑफ डिफरेंट कंट्री, गूगल गिव द इन्फॉर्मेशन कि भाई यूरोप के लोग ये ज्यादा देखते हैं और जापान के लोग ये ज्यादा देखते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन का कोई रिलायबल सोर्स है? नहीं, वो आपको गूगल या जो स्टैट्स वाली वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पे मिलेगा। आप रिकमेंड कर सकते हैं कोई? मतलब मैंने नहीं चेक किया कभी, बट यार गूगल से आप निकाल सकते हो ये सब डेटा पढ़ के। यूल रीड एंड यूल, अब तो चैट जीपीटी है, सो यू कैन यूज चैट जीपीटी एंड गेट ऑल दैट स्टैट्स एंड ऑल वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, ओके, थैंक यू। Okay. So you have assignment of LinkedIn ads as well. So please just, I'll just show you. यहाँ तक हो गई सबके assignments, part 3 version 2। नहीं सर। कोई बात नहीं, आराम से कर लो, बट प्लीज सबमिट कर देना सब। So you have is your LinkedIn ads and profile optimization. So you have to create your LinkedIn profile and optimize using the below points. So आप ये पढ़ के अपडेट कर देना सारा। And LinkedIn profile over here. Create an end-to-end campaign for your brand on LinkedIn for upcoming month with a budget of rupees 60,000 rupees, and put the screenshots of
and justify the reasoning behind each below screenshot. You can also make presentation for this task, that objective, bidding, budget, start date, end date, audience placement and final ad preview. तो ये आपको कैंपेन बना के सारे स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं. So same, you have a campaign for Twitter as well. Create an end-to-end campaign on Twitter for your brand for upcoming month, 120 days with a budget of 1,20,000 and share the screenshots for objective, budget, start date, end date, audience placement and final ad preview. Right. So you have to take all these screenshots. Right. So now we are left with like Pinterest, YouTube, and the basics of like business WhatsApp. Right. So we'll cover that. Tomorrow we will get a complete like Pinterest and WhatsApp. Right. Then day after that, we will be able to get on to YouTube. So I'll also give you documents like what is the YouTube algorithm and how to create a channel and how to upload videos on YouTube and what are the best tools that are available to work on YouTube part. Right. So हमारा थोड़ा सा ये बचा है. Are you guys working on the capstone projects? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. ठीक है, वो भी आप सबमिट कर देना मुझे. ठीक है. Can you please push the deadline to the weekend before Saturday or Sunday? It's been even these tasks are piled up. So हाँ, कोई बात नहीं, आप वीकेंड तक सबमिट कर देना उसको. thank you, sir. नो प्रॉब्लम. राइट. सो ठीक है गाइस, करो इन सब चीज़ों पे काम एंड अगेन we'll just like finish couple of topics and I'll try that one. If we are done with the topics early, then I'll keep a session for just having discussions around the social media part and I'll take your doubts also. Right. So any questions, anything you guys want to ask? I've also dropped the feedback link. Please fill it up. And any questions? Yes, sir. All right. So, all right, guys, I'll see you tomorrow. Right. Take care. Bye bye. Yes, sir. Thank you, sir. तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट का डेडलाइन है क्या सर? नहीं नहीं, आप सबमिट कर देना, कोई बात नहीं. You have like 8-10 days. नेक्स्ट वीक तक सबमिट कर देना. चलेगा. थैंक यू सर. All right, guys. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir.